So hi everyone. So yeah, this video is all about project. So recently मेरे को एक project का briefing मिला. So I just thought कि why not to just document the overall process of overall building a small MVP kind of thing, or you can say a prototype. I'm not going to build a complete thing which is required in this, but yeah, एक prototype is what I am going to make. Okay. So yeah, मतलब एक basics idea what should be my flow of thoughts. I'm going to think and just share it in this video. So be along. Yeah, this is going to be an interesting video. So yeah, मैं इस project को आपके सामने I will go through it and then plan it and then make it on NA10. Okay, the flow that how to make it. Okay, so the overall idea is this company is requiring some kind of hiring automation where they will be going to putting some JD, okay, job description, and according to that job description they want some candidates to scrape out. And how to scrape out from some various sources, for example some LinkedIn or some like Apollo, or maybe from anywhere. Okay, जो relevant candidates they wanted to get from that automation. Okay, they wanted it to put it into a sheet. Okay, maybe Airtable or some anywhere else as well, but for this video, for this sake, I am just going to stuck on the Google sheet. So yeah, let's see how it goes. So फॉर दैट एंड उसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप विल बी वो कैंडिडेट्स जो कि वहाँ से निकल करके आएंगे उनके पास में पूरा, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम उनको वीडियो एडिटर्स चाहिए किसी एरिया के, वहाँ के अगर वीडियो एडिटर्स वी कैन स्क्रैप आउट यूजिंग सम कीवर्ड्स जो स्पेसिफिक उनके जीडी में हैं, एंड देन उन कीवर्ड्स उन जो वीडियो एडिटर्स हैं उनको फिर एक आउटरीच मैसेज भी चला जाए, personalized outreach message according to our requirement, that if they are interested, yeah, we are looking for some video editors and your profile got shortlisted. So yeah, that's what the idea is. Simple to reduce the manual efforts in it. They will just going to put the JD and उन required people के पास में वो requirement चला जाएगा कि यार we are looking out for some video editors and your profile is perfectly matching according to that. So how we can make it? Okay, to more understand it, I just wanted to pick this and just put it in the chat GPT. I want to use this. Okay, explain me. Explain me this more clearly. Yeah. Yeah, simple. Yeah, so as you can see on the screen, they want a JD, a parsing strategy, so that the automation can get the relevant keywords, relevant data out of it, then filter it based upon the keywords and all, and then get the talent search and shortlisting according to the logic or some whatever logic we use basically. Okay, like we use LinkedIn to scrape out these leads, these talents, maybe Apollo, maybe some other database,
and then using some filters to just get those skill matched people only. उसके बाद में मे बी जस्ट शोकेस करना है उनको specific candidates. Okay, and then the most important thing is outreach message. Then dashboard output should be on some sheet or something like that, Google Sheet or something. Okay, otherwise what we can do is the next level thing we can do is that is the lovable. Okay, we can create some front end or something like that and just showcase it, keeping the backend as Airtable and showcasing it in lovable or something like that if they want. Otherwise, keeping it simple, we can just put it in these kind of something or some CRM, some maybe go high level or whatever. Okay, yeah, simple. So let me show you that how we can build it. Okay, yeah. So इसके लिए अभी अपन क्या करेंगे? The first step, why is it not working? Let me check. Yeah, now it's working. So the first thing is Google Sheets. वहाँ पे अपन GD डालेंगे. Okay. Second, it will be going to take the data, take the important keywords from it. Okay, so for that we can use ChatGPT. Okay, to get the keywords. Yeah, so the third point is after these keywords we can use Apollo and create a URL using these keywords. Okay, now after this URL we can use Apify to scrape out the candidates. Okay, now the next step would be to actually run it. Personalized messages for each candidate. Okay, and then send it. ठीक है. So yeah, I don't know ये क्या मैंने बना दिया, but I think you have got the idea. Now let's go to N8N and just let's see how we can make it. Okay, so for that, if I have to go to N8N, let's just create a new workflow, starting it with the trigger, then Google Sheet. Okay, get a row. Okay, now we need to create a sheet as well. Sheet dot new. Okay, इससे एक नया शीट बन जाता है यूजुअली. Okay, let's say JD. Okay, now we need to put a column where we can put a JD. Okay,
Nice. Perfect. Now we need to put a JD here. So for example, let's say we need a software developer. Okay, now what we need to do is jobs. Go into jobs. Okay, these are all the jobs for the software developers. Okay, let's see some JD which is having some briefing. या दिस इज़ द परफेक्ट आई थिंक. ठीक है, ये जेडी को मैं उठा रहा हूँ पूरा जो भी है डिटेल्स. नाइस एंड परफेक्ट. आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑल द जेडी डेटा इनटू इट. नाइस. ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस, लेट मी टेक जेडी sheet 1. Now if I run it, it will be going to give us the JD data जो कि हमने put in किया है. Like you can see position title, software engineer, function group and all whatever. Okay, yeah. So यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. We have got the data. Now what we need to do is, so now at this moment we have this JD. एंड अभी अपन क्या कर सकते हैं. सो नेक्स्ट थिंग हमारा जो था दैट इज़ कि चैट जीपीटी का यूज़ करके कुछ कीवर्ड्स निकाल करके लाने हैं. सो इसको करने के लिए आई हैव डन वन थिंग कि वी एक्चुअली नीड अ प्रॉम्प्ट फॉर इट. एंड चैट जीपीटी नोड को हमें यूज़ करना है एट दिस मोमेंट. वी कैन यूज़ दिस मैसेजिंग वाला. ओके, एंड लेट मी यूज़, यू कैन से 4.1 mini. okay, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यूज़ लेस क्रेडिट्स. ओके, बिकॉज हर क्वेरी के साथ में कुछ क्रेडिट्स आपके लगते हैं. सो या वन थिंग आई हैव डन इज़ आई हैव गॉट सम प्रॉम्प्ट्स. ये प्रॉम्प्ट है. ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग जस्ट टू सेव सम टाइम. सो एज़ यू कैन सी दैट ये प्रॉम्प्ट को भी मैंने डाल दिया है. एंड इसके बाद में नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड दिस JD हियर एट द रेलिवेंट पॉइंट. सॉरी, वो प्रॉम्प्ट ही हट गया. या ठीक है, अभी इस JD को रिप्लेस करके वी जस्ट नीड टू पुट आवर मेन JD. या सो नाउ एट दिस मोमेंट आफ्टर पुटिंग दिस JD, if I run it, it might take some time. Yeah, and then it gives some this kind of output. Nice. Now from this we need to use some code wala node. And for it as well, I have some, you can say, yeah. Now if I run it, it will be going to show me this kind of data out of it. Nice and easy. Perfect. Instead of this, what we can do is we can just put the direct content. Yeah, it will not show that red wala thing. Yeah, ठीक है. Now we have got a very clear keywords from the JD. ठीक है, and जैसे जैसे अपन JD चेंज करेंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ चेंज हो जाएंगी. Now this is a JSON parser, you can say. इसको अपन पार्स कर रहा है कि कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन. ठीक है, नाउ हमको URL जनरेटर चाहिए. एक और कोड नोट डालेंगे
एंड इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉरी I need to do this thing. Yeah, this thing. Okay. Yeah, you can use ChatGPT to generate all of these जो भी मैं points आपको बता रहा हूँ. You can use these things definitely. So for these points, I am going to use these directly. Location, perfect location. For this company size, if we have the company size, we can use it, or otherwise just remove it. We don't have this one. Number of employees, no issues. We can just remove this. And organization keywords, industry. Yeah, this one. Perfect. अब इसको बस हटाना पड़ेगा एक पार्ट से, ठीक है. Yeah, now if we see, we have got a URL and it is a working URL. As you can see, इसने ऑटोमेटिकली सारे कीवर्ड्स लगा दिए वट एवर वी वांट, एंड उसके अकॉर्डिंग इसने सारे जो प्रोफाइल्स हैं वो स्क्रैप आउट मतलब दिखा दिया अपन को. नाइस. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव दिस URL. The next step is actually getting all these data scraped out. For that we will be using this Apify के ऊपर यही वाला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू नीड टू जस्ट चेक इट कि कौन सा इज़ वर्किंग. सो फॉर दैट देर इज़ वन थिंग वी नीड टू डू. वी नीड टू गो इनटू इंटीग्रेशंस. वी एक्चुअली नीड टू चेक कि कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है. आई एम गोइंग टू टेक दिस Apify. या Apify डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज HTTP node I usually like to do this way. Post, okay, and send body, and this should be JSON. And what should be the JSON? We will be going to get that from this in JSON. Nice and easy. Perfect. Now instead of this thing, we will be removing it. I'll put this. Inside inside of double quotes. Perfect. Now if I test it, and as the limit is 5, so it will be going to scrape. I think it is not working, and it happens, so we need to actually test with other and there is one reason as well, like this is not working at the free plan, so we need to go and search it here. I think मैं सर्च कर रहा था तो I think this was working. I'm not sure, but need to check. Let's see.
Okay, we need to pick this one. Okay, actor synchronously and get dataset. Put it into our this one. Sorry, this one. Yeah, and so या इसको रिप्लेस कर देना है इस यूआरएल से. Now if we see, oh sorry, it is with this. I just want 5. I think this is gonna work. It is showing the details. Okay, yeah, it is scraping. Okay, and 0 contact found. Why it is saying that? No, I think it found 25 outputs. So yeah, it is doing its work, but 5 किलोमीटर डालते तो ज़्यादा सही रहता, but no issues. So next काम क्या कर सकते हैं? It will be going to give us some 100 of contacts. मतलब हमने 100 का लिमिट डाल दिया तो 100 उसने दिया है. But now what we can do is we can just loop. Okay, and just put some sheet. Append. If I take this sheet and just put it like just connect it with this. Now after we get this, it will be going to get update all the candidates whichever we get from this into this sheet. Nice. तो आई थिंक इसका भी अपडेट वी नीड टू सी इट कि कितना है. इसने 49 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिया है. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ इट एंड आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, नॉट स्ट्रेचिंग द वीडियो सो मच. सो अभी इफ़ आई हैव टू जस्ट सेव दिस, सॉरी वो बंद हो गया. लेट्स रीरन इट. Yeah, we have got the results. Okay, we have got the results and we have got a lot of results. Okay, it actually depends upon the this one, जो भी हमारे स्क्रेपर है. ठीक है,
and now we can just run this one. लेट मी डू दिस थिंग। ये एक ही बार रन करेगा। अगर हम यहाँ पे अगर मैं कोई भी नोड लगा देता हूँ, लेट्स से AI या वेट वाला, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, इट इज़ एक्चुअली क्योंकि मैं एक एक करके रन कर रहा था, लेट्स से ये क्या होता है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कर देता तो ये लूप ओवर नहीं करता। इट इज़ हैविंग सम इशू इन द शीट, बट आप देख सकते हैं कि इसने एक डिटेल डाल दी है, एंड लाइकवाइज इट कैन पुट ऑल द डिटेल्स इन इट। ओके, सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आई हैव शोन यू दिस थिंग। स्पेसिफिक क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ करी जा सकती है, बट आई थिंक मैंने आइडिया दे दिया है आपको। एंड इसका ये स्पेसिफिक सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इट इज़ नॉट वेरी बिग इशू। ओके, प्रॉब्लम इन वन नोड, at least one value has to be added under value to send, value to send, value to send, value to send, maybe you can say ID, maybe. Let's say what happens. It executes greatly. Perfect, it is working. Okay, as because we have all the details in it, we just need to, मतलब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना था। उसने डिटेल्स डालना शुरू कर दिया है, बट मैंने इन सभी पॉइंट्स में मैंने इनको आई थिंक मेरे को अपडेट वाला यूज़ करना चाहिए था, अप एंड और अपडेट अरो, तो ज़्यादा सही रहता, बट ठीक है, जो भी है ठीक है। तो आई थिंक आई यू हैव गॉट द आइडिया। एंड सेकेंड थिंग जो कि हमें करना था, विच वाज अबाउट द दिस फ्लो, इसके अंदर क्या है, वी हैव टू ट्रिगर, वी नीड टू यूज़ अ शीट, जो कि हम आई वॉज यूजिंग लाइक दिस। From this we can put some filter or some limit filter, like कि जिसका पर्सनलाइजेशन हो चुका है उनको नहीं करना है, जिनका नहीं हुआ है उनका अपन कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट वी कैन लूप ओवर, क्रिएट सम पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, लाइक हम रन कर रहे थे तो एक एक आइटम को ले करके, एक आइटम क्या होता है, आइटम ये एक जो भी है कैंडिडेट्स हैं, ओके, उनके डिटेल्स को लेकर के पर्सनलाइज मैसेज डालेगा, एंड इट विल अपडेट इन द शीट। सो इट विल लूप ओवर टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स, एंड इट विल क्रिएट अ मैसेज समथिंग लाइक दिस, सिंपल। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शो किया था। सो समथिंग लाइक दैट वी कैन जनरेट सम पर्सनलाइजेशन using any10, okay, and after that we can just use this sheet, create one more maybe an automation, जिसके साथ में we can connect it and we can then send it via LinkedIn or whatever the platform we can we want it, okay. So that's how this all can be done. सो या आई होप कि आपको ये ओवरऑल बढ़िया लगा होगा। मे बी थोड़ा सा बोरिंग था, बट दैट्स द रियलिटी, मतलब थिंग्स आर बोरिंग इन when we implement it, okay. So if you love it, just let me know, and thanks for being till the end, till here. But yeah, thank you so much.